हेलो पिला माने केमिति अछ सब सब भल अछ तो सेमती भल था देख ऑलरेडी ब्रेकिंग न्यूज़ तुम मान लगी कौन ना मे 13 सुधा तुम मानकर +2 परीक्षा फल मे 13 तुम मे 13 रे तो प्रकाश होगा जाऊँगी से पूर्वर तुम परीक्षा फलटी शीघ्र तुम प्रकाश हो+2 परीक्षा फल से रिगार्डिंग देख आज आम भिडियो आलोचना करवा किपरि भाव में तुम परीक्षा फलटी प्रकाशित होउची प्रकाश पाइब एवं केउं पर्यायर सब खाता देखा आरंभ हो गलानी एवं एथि सहित एई वर्ष तुम जहाँकि विश्वास करा जाउची कि कौन ना बहुत भल रिजल्ट टी हम एवं कौन रही सब तथ्य ये सब विषय आज आम आलोचना करवा। तो देख आज प्रकाश पाई तुम देख संवाद पेपर एटा देखिपार जे कौन जे तुम रही मे 13 सुधा +2 परीक्षा फल बुझीपार कौन रही देख सूचना सब आलोचना करवा। देख कौन कही जे सरीला प्रथम पर्यायर खाता मूल्यांकन ताले प्रथम पर्यायर जे खाता जे मूल्यांकन थिला तार देख सरी तुम जानिच ऑलरेडी ए वर्ष 2टी पर्यायर खाता देखा प्रथम पर्यायर मूल्यांकन से सरी एवं कौन है ना 20 सुधा द्वितीय पर्याय शेष है एवं 20 एप्रिल 20 सुधा क्यों 20 ना एप्रिल 20 सुधा तुम द्वितीय जे परीक्षा फल रही द्वितीय परीक्षा खाता देखा सरीज बुझीपार। तो देख कौन रही संपूर्ण तथ्य देख आलोचना कर देख जे ओडिशा रे साधारण निर्वाचन जरा रही पूर्वर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद जे कि रोचे CHSE कौन अच्छी ना अधीन द्वादश श्रेणी छात्र छात्री परीक्षा फल प्रकाश पाइब बुझीपार। ताले ये साधारण निर्वाचन जेहेतु अच्छी एवं से सहित कौन है ना द्वादश श्रेणी जो परीक्षा माने +2 श्रेणी जो परीक्षा फलटे प्रकाश पाइब हाथ में आउ 1 मास रही बुझीपार। बर्तमान कौन आउ मासे मात्र रही कहीं ना मे मसरे बर्तमान मे मसरे तुम परीक्षा फलटी प्रकाश पाइब मात्र मासे रही है मासे रही कौन अच्छी जे खाता देखार जे मूल्यांकन रही से जे खाता देखाटा अच्छी हाथ में आसे समय रही खाता देखार मूल्यांकन को त्वरान्वित कर बुझीपार माने जता शीघ्र हम खाता को देखाइवाई प्रयास चली तो कौन अच्छी ना एप्रिल 4 सुधा बुझीपार एप्रिल 4 रही एप्रिल 4 सुधा प्रथम पर्यायर खाता देखा रोचे बुझीपार प्रथम पर्यायर खाता देखा शेष करने को लक्ष्य कर विलम्ब हो बुझीपार। तो देख से विलम्ब होते किसी चिंता करा दरकार नहीं कहीं तुम एप्रिल जे रही एप्रिल मास सुधा 20 तारीख सुधा खाता देखा सरीज और 13 सुधा तुम परीक्षा फलटी प्रकाश पाई बुझीपार। कौन कौन बाधा विघ्न घटी यह सब देख आलोचना अच्छी तब कौन अच्छी देख जे आज प्रथम पर्यायर उत्तर खाता मूल्यांकन शेष हो बुझीपार। ताले जे प्रथम पर्यायर जो मूल्यांकन अच्छी तार आज शेष हो एहारी भितर राज्य में जे रही तुम 69टी ऑफलाइन और 41टी ऑनलाइन मूल्यांकन केन्द्र में द्वितीय पर्यायर खाता देखा आरंभ हो बुझीपार। बर्तमान द्वितीय पर्याय खाता देखा रही तुम ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत मध्यम 70टी 69टी रोचे और 41टी रोचे पर्याय केन्द्र में खाता देखा आरंभ हो द्वितीय पर्याय खाता एवं 7000 अधिक शिक्षक शिक्षयित्री उभय ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम कौन कहते ना जे मूल्यांकन से सामिल होती बुझीपार। एवं एथि कौन अच्छी ना विज्ञान और वाणिज्य विभाग अधिकांश विषय उत्तर कौन खाता मूल्यांकन इतिमध्य शेष पर्यायर पहुँची ताले ये कौन कही ना साइंस विज्ञान एवं वाणिज्य साइंस एवं कॉमर्स जो खाताटा अच्छी मूल्यांकनटा प्राय शेष हो आसी शेष पर्यायर पहुँची कला और धंदामूलक माने तुम रोचे आर्ट्स एवं वोकेशनल जो रही विषय गुड़िकर मूल्यांकन एबे जारी रही बुझीपार। ताले बर्तमान सुधा तुम वोकेशनल एवं जे आर्ट्स मान रही मूल्यांकन जारी रही हाथ में कम समय रही कौन होती ना अध्यापक और अध्यापिका उपस्थापना को सुनिश्चित कर बुझीपार। जेहेतु बहुत कम समय अच्छे उपस्थापन को बहुत सुनिश्चित कर यथाशीघ्र जमी खाता देखा हम एवं देख कौन अच्छी ना चलित वर्ष समस्त विभाग जो रही परीक्षा फल गोटे समय प्रकाश करने को परिषद लक्ष्य रखी ताले यही वर्ष जे आम जानूचे जे प्राय वर्ष मानक कौन हुए सब वर्ष तो आर्ट्स आर्ट्स प्रथम तो साइंस रिजल्ट बाहर तापर आर्ट्स एमती कर गोटे गोटे स्ट्रीम रिजल्ट बाहर किंतु यही वर्ष तुम गोटे दिन में समस्त साइंस आर्ट्स कॉमर्स वोकेशनल समस्त रिजल्ट प्रकाश हम बुझीपार। तापर देख कौन अच्छी जे जो मार्च 20 रे परीक्षा फल शेष होगा क्षणी 22 तारीख को कौन होती ना मूल्यांकन आरंभ हो बुझीपार। ताले मार्च जो रोचे 20 रु जे परीक्षाटी सरी 22 तारीख तो से मूल्यांकन आरंभ हो मूल्यांकन केन्द्र गुड़िकर सुरक्षा व्यवस्था
কড়াকড়ি করা যাইছে তাহলে মূল্যাঙ্কন যেটি হচ্ছে যেটি পরীক্ষা দেখা হচ্ছে সেটি মধ্যে সুরক্ষা ব্যবস্থা বহুত কড়াকড়ি জারি রয়েছে কিপরি না মোবাইল ও বৈদ্যুতিক যে সামগ্রী পরিবেশ উপরে কটকଣା লগাଯାଇଛି ହେଲା যেপরি ভাবে যে বৈদ্যুতিক সামগ্রী হোক বা মোবাইল হোক এসব মধ্যে কটকଣା লগাଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ନ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେ ଶୌଚାଳୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଲଗା ରହିଥିବା ଯେ ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଖାତା ଦେଖାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରବଳ ଯେହେତୁ ଖରା ରହୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହୁଛି ଖାତା ଦେଖା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସି ଲଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଫଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯେ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାର ସମସ୍ୟା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଖାତା ଯେପରି ବିଳମ୍ବ ନ ହେଉ ତାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପରେ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେବେ ରହିଛି ତୁମର ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ଯେ ଦଳ ଓ ହୋଲି ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର 2 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଯେ ଅଶୋକ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯେ ଦଳ ହୋଲି ପାଇଁ ତୁମର 2 ଦିନ ଖାତାଟି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିବା ଲାଗି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନହେଲେ ସେହିଭଳି କୌଣସି ଯେ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛି ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇନାହିଁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଶେଷ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯେ ଖାତା ଦେଖାଟି ଏପ୍ରିଲ 16 ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 16 ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ଅଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସରିଯିବ ତା ସହିତ ମୋର କୁହନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟତା ଧରା ହେଇଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 20 ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ନିହାତି ଭାବରେ ଖାତା ଦେଖା ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇ ରହିଯିବ ଏବଂ କ'ଣ ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସରିବା କ୍ଷଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଆଉ କ'ଣ ନା ମେ 13 ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ମେ 13 ଯେ ରହୁଛି ମେ 13ରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଭିତରେ ବାହାରିବ ଆଇଦର 10 ଯେ ବାହାରିପାରେ କି 13ରେ ବାହାରି ଯାଇପାରେ ତ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ମେ 13 ପୂର୍ବରୁ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଭାବୁଛି 10 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ ଏତିକି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମର 10 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ସିଓର 10 ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓର ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଥାଅ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି କିପରି ଭାବରେ ତୁମର କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଏବଂ କେମିତି ତୁମେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବ ନିଜ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏବଂ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେ କହୁଛି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଥିସହିତ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତୁମର ସାଇନ୍ସ ହେଉ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ କମର୍ସ ଭୋକେସନାଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ଫଳ ହେବ ରେଜଲ୍ଟଟି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ମାତ୍ର ଦେଖ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳଟି ବାହାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ଅନଲାଇନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଭାବୁଛି ମାର୍କ ଦେଖା ନେଇ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନିହାତି ଅନଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ଟି ତୁମର ସାଇଟ୍ଟି ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାମ୍ ରହିଥିବ ତ କ'ଣ କରିବା ତ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ତୁମର ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ରହୁଛି ଆଖି ଆଗରେ ତ ସେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ହିଁ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ମାର୍କ ରେଜଲ୍ଟଟି ଦେଖିତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ତୁମେ ପାଇଯିବ ତ କିପରି ତୁମେ ମାର୍କଟି ଦେଖିବ ମୁଁ ନିହାତି ସାଇଟ୍ଟିକୁ ନେଇ ଆଣିବି କି ସାଇଟ୍ରେ ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିବ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ତୁମ ମାର୍କ ଫଳ ଦେଖିବ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ସେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଥରଟି ପଠାଇଦେବ ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024ରେ ତୁମ +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖାବା ତୁମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।